एम अतिकुल एंड दिस इज माय चैनल अतिकुल फिटनेस। स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो पे। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं शिलोंग पे हूँ। तो आज मुझे बाहर जाके चिकन एंड ओट्स लेना है, तो बने रहिए इस वीडियो पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब डाउन बिलो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप लोगों ने मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी देयर, क्योंकि मैं दिन में क्या क्या करता हूँ वो सारे स्टोरीज में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो मैं अब जाऊंगा मार्केट मेरा ब्राउन ब्रेड चिकन एंड ओट्स लेने। और आज बहुत ही अच्छा सनी वेदर है और शिलोंग का वेदर का कुछ कह नहीं सकते। अभी धूप होता है और अभी बारिश। तो मैंने अभी चिकन एंड ओट्स ले लिया है और अब मैं जाऊंगा एग्स एंड ब्राउन ब्रेड लेने। So I'm done with my shopping, came back home और बारिश शुरू हो गया। मैंने बोला था यहाँ का वेदर कभी भी बदल जाता है। तो अब मेरे वर्कआउट में ऑलमोस्ट 1.5 आवर बचा है, तो अब मैं मेरा प्री वर्कआउट मील लूंगा। इस मील पे मैं 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी एंड 2 ब्राउन ब्रेड विद जैम लेने वाला हूँ। तो ये मील लेने के बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिलूंगा वर्कआउट सेशन पे। So I'm done with my workout session। जैसे कि मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं अभी 2 बॉडी पार्ट भी एक ही दिन में कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ लिमिटेड मशीन्स एंड वेट्स है। तो अब मैं जाऊंगा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील लेने, और इस मील पे मैं आज लूंगा 150 ग्राम्स ऑफ चिकन एंड 250 ग्राम्स ऑफ राइस। एक अच्छी वर्कआउट सेशन के बाद जो खुशी मिलती है वो कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगली वीडियो पे। अंटिल देन, लेट्स ग्रो टुगेदर।